Mr. Gaurang Vasavada, who is an ex-banker and FEMA expert as well as EMA trainer, to please come on the stage. Now I request Shri Saket Kumarji from the ECGC Limited to please take the stage. On behalf of AMA, I would request Mr. Gaurang Vasavada to kindly felicitate Saket Kumarji with a small memento, please. I will now felicitate Mr. Gaurang Vasavada also. Yeah. This session is going to be an interesting one. I think all of you are waiting for this session, and we have Mr. Gaurang to moderate the session for us. He will be interacting with Saket Kumarji, and Saket Kumarji will also has he also has a brief presentation that he would like to make in front of all of you. So I'm hoping for a very good and insightful session. Over to you, Gaurang sir. Good afternoon. Welcome all. So last session was on the new avenues of financing, and Exim Bank. I also never knew some of the new products what they have launched, and their extension to Gift City by way of a subsidiary which does factoring. And I was just listening to ma'am telling somebody that if you have a relationship with a buyer, then definitely they may come into the factoring picture. But largely हम क्या जानते हैं? फैक्टरिंग अभी एक नया बेबी है फील्ड में, और एग्जिम बैंक पे हमारी कब रीच होगी उसके पहले हम ज़्यादातर बैंक फाइनेंसिंग के बारे में जानते हैं, और दूसरा हम जानते हैं कि मुझे अपने बायर को क्रेडिट क्या देनी है. So more important that buyer, no, because it is all a buyer's market, the buyer is always asking us or squeezing us for credit period. So how does an exporter think of hedging his risk or covering his risk? So it is just like taking a bike on road and doing insurance. So this has become now, as we grow, we need to cover ourselves. Now, every insurance has a cost. And we were just talking that people are reluctant to pay cost. But क्या मैं गाड़ी सिर्फ रूल है इसलिए इंश्योरेंस कराऊं, या पुलिस वाला इंश्योरेंस पूछता है इसलिए पुलिस इंश्योरेंस कराऊं, या मेरी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस कराऊं? तो बिजनेस ऑल्सो वी नीड टू डू इंश्योरेंस फॉर अवर exposure on buyers, because every time we are giving some 60 days, 90 days, 120 days credit, and we are also looking at different risk countries. One side we have Singapore, another side we may have some African country, or we may have maybe countries like Malawi or Oman, or maybe different levels of risks are there. So how do we cover ourselves? So in this session we have Mr. Saket Kumar, branch head and AGM from ECGC Ahmedabad. And he is going to cover the topics relating to how ECGC is active in promoting exports by way of helping exporters to take exposures on buyers, and also the financing which is done by the banks, both the sides. So what we intend to do is that we'll have first the presentation from Saket sir, and then I will ask certain questions on your behalf. Because I have been doing at least 3-4 sessions every month on export finance with various agencies, even including AMA also. And what I take away from you all, maybe you can also ask the questions if I miss on something, but what I take away from you will I ask directly, and I have this opportunity today to maybe ask directly to the person who will tell us that how they are helpful and what we should do. So Saket sir, over to you, and welcome to AMA. On behalf of AMA, this is an opportunity, and I think this is the first time that you are in AMA, and we look forward to many more such sessions. So welcome sir, floor is to you. Thank you, Gaurang ji. Good morning all.
This is my second session in AMA. Of course, first was with DGFT last month, where we were sensitizing exporters that how you can explore the opportunity in e-commerce market and how ECGC as well as banks can help you in expanding this business. That is also need of the hour, that it is getting very handy and very attractive also. So thank you, Gaurangji, for introduction, and thanks to AMA for organizing such a unique seminar or conference. Basically, any sort of seminar or conference, wherever you get the time to attend, you get the opportunity to attend. I personally believe that there is something new that you always tend to learn, and you always learn also. So here also I would like to tell you that we'll be learning some new horizons, because though India is a huge country, but as far as penetration of insurance is concerned, it's very, very low, significantly low. मैंने जब मेरी लाइफ पे टर्म इंश्योरेंस लिया था, तो माई फादर वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या यूज होने वाला है. बट द मैसेज टू माई फादर वॉज वेरी सिंपल, दैट व्हेन आई एम देयर इट्स ओके, इफ आई एम नॉट देयर, of course physically I cannot support my family, but at least financially I can support my family. So there has to be a backup, and it is you and only you who has to plan this backup. आप जब हैं ही नहीं तो किस बात का बैकअप. तो don't plan that we'll take a backup later on. The day you start any sort of ventures, any sort of business, any sort of firm, you just think on all sort of pros and cons and try to take the maximum whatever is being offered in that country by different firms. Insurance also plays a major role. So once again I welcome all of you to this forum, and ECGC has been functioning since 1957. Just last week we completed 68 years in operations. We have been established to promote exports from India, and that is what we have been doing for last 6+ decades. As an exporter, when you ship your goods, there are certain challenges. Simultaneously, there are huge opportunities also. But we try to give a message to exporters fraternity that you be confident, simultaneously you be cautious also. Don't be over aggressive while you are into export activity. Domestic, of course, you have certain control. Flight ली चेन्नई चले गए, हाँ भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे हो. This is not always practically possible when you are into international trade. Your buyers are across the globe. They are in far-flung areas. You may not know the country. You may not know the buyer. Then again, if you concentrate on visiting the buyer to get the payment, who will concentrate on expansion of business in that case? So concentration of risk remain, irrespective of whether you are into export or you are likely to start the exports. तो आप existing exporter हैं या potential exporter हैं, international trade में there are certain risk factors where ECGC can be instrumental in expansion of your business, and that is why we have been established and we are supporting our vision. We are providing export credit insurance. Apart from that, the mission what we have been given is that provide the credit insurance, but simultaneously ensure that the cover offered to you is optimum and on a reduced premium rates. As we told, we are 100% central government organization. We are coming under administrative control of Ministry of Commerce and Industries. Though we are limited by nature, why we are 100% central government organization? Because 99.9% of our shares are with the Honorable President of India. And that is the reason that ownership 100% is with Government of India. Being insurance company, we are also regulated by IRDAI. And apart from that, we are premium export credit agency of this country. As far as claim payment ability is concerned, there is an institution who rate insurance company based on their based on their claim payment ability. We have been rated highest in the industry, that is IAAA. So, जब insurance की बात आती है, there are two type of insurance in export transactions. When you ship your goods, till your goods reaches buyer's port,
you can go to any marine insurance company and you can have your risk covered under marine risk. You can go to any general insurance company. So technically goods, the question will arise as far as loss or damage to goods is concerned. The ship, the voyage, it may result into, it may sink or something may happen like that. So those risks are falling under marine insurance risk. Apart from that, exchange risk also is there, where you can approach your bank, you can have hedging, forward options, whatever you believe to have this. The role ECGC plays where your goods are reaching buyer's country technically. Once your goods reaches buyer's port, our role starts. Because that is the point when you will come to know whether buyer is going to take the delivery of the goods or not. If he has taken delivery of the goods, where he is going to make the payment or not. So technically you are on the mercy of the buyer. सामान भैया ले जाओ आप 30 दिन 60 दिन 90 दिन की जो भी हमने उधारी दी है आप पे करो ठीक है नहीं पे करोगे तो I will have sleepless nights. But what you can do technically, that is where ECGC comes in picture. Because if you see whatever products we export from India, most of the time our products, or say 100% products, are exported on credit terms. We don't have that much credibility that buyers will pay advance to us. And if you insist for advance, you lose orders. Because your counterparts, your neighbor exporters, even from Gujarat or in worst case from China, Pakistan, Bangladesh, they are ready to offer credit. Why he will buy from you? Very simple. So it is buyer's market, and since it is buyer's market, buyers are in a position to dictate the terms, and it start with open credit. Forget the days that you will be negotiating the terms on LC. Very tough, very difficult. You are restricting your business because it cost. LC involve cost. It escalate your invoicing. It escalate your costing per units. You are not competitive. And in international market, you have to be very competitive. Simultaneously, quality को भी compromise नहीं करना है. Because India is not China. Whatever you are getting is because of your quality that you are giving to your end customers. That is one point of attraction. But again, you have to compromise on costing. Because it's very competitive market. So, sometimes goods are also customized. Suppose Trident or Wellspun, they are supplying their towel to one of the hospital chain in USA. Mayo Healthcare is, for example, Mayo is a chain in USA. Now these bed sheets or towels are having Mayo brand. Trident will not put their brand as per terms and conditions, as per contracts. Wellspun will not put their brand. Raymond's will not put their brand. Those goods, if you are not in a position to export, or even if you have exported and buyer is not taking the delivery, what you are going to do with those goods? Because goods are highly customized in nature. वो scrap value में भी यहाँ नहीं बिकने वाला है. So all these sort of losses can arise when you are into export transactions. There are certain losses which you cannot think of. Sometime it may so happen कि आपका detention damage ही उस country में goods value से ज़्यादा हो जाएगा. Forget the salvage value. You have to pay also additional over and above the invoice value. So there are n number of risks as far as international trade is concerned, as far as export is concerned, and all these sort of risks basically falls under credit insurance category. And how we help you, will let you know. So we have variety of schemes through which we are promoting Indian exports. Variety of schemes means irrespective of your type of business, the goods whatever you are exporting is as per technically permission of DGFT or FEMA guidelines. We have product for all sort of goods. We have product for irrespective of your turnover, whatever size you are having of your business, whether you are an existing exporter or you are established player with huge turnover, or you have only first order with you in hand. So non-payment of overseas buyer, that is what technically we are covering. Apart from that, we also extend our hand to all the banks who technically extend export finance to Indian exporters. As an Indian exporter, you approach banks. Banks, they fund you export finance in terms of packing credit and post shipment. But again, your collaterals are always not sufficient.
to get the adequate funding from bank. Or if we say ulta side, banks are not always comfortable to fund you whatever you are requesting because your collaterals are not sufficient. 30, 40, 50% का collateral रहता है against the 100% funding like that. And in between, if you have expansions, you need additional fund. What we provide to Indian banks is, we also provide insurance to Indian banks by covering your accounts technically. But again, let me tell you, policy what we provide to Indian exporter is basically provide coverage failure of Indian buyers, export buyers. But what we provide to Indian banks is technically against the failure of borrower who happen to be Indian exporters. So there is a thin line difference. Both the products are different. Don't try to mix and match. So this helps bank to offer liberal financing to you without seeking additional collateral or extra collateral. Apart from that, we also provide trade related services. I'll explain it later. Overseas buyer का क्या credibility है? What credit worthiness he is having? Whether you should offer credit or not? All those points we can let you know. Apart from that, in case you are not having any policy but with us, you are not a policy holder of ECGC, but still you have some bad debts. आपने export किया और पैसा नहीं मिला है, we can assist you. We have mechanism to help you. Because technically, when we were established, it was of course a motto to export, give the drive to exports from India. Apart from that, this was also motto that let us not lose dollar and let us help those who have lost dollars. So technically, we help you in recovering your bad debts also, irrespective of whether you are policy holder for us or not. We help you in managing your risk. Apart from that, we have huge data of buyers. And as far as data is concerned, the list is concerned, it comprises of good buyers also, bad buyers also. Bad buyers are technically those buyers who have default history, who have already defaulted to Indian exporter once or twice or n number of days. So we maintain that database that help you to identify कि इस buyer के साथ business करना है या नहीं करना है, deal close करनी है या नहीं करनी है. So we play a pivotal role here in deciding the offering of credit to buyer. Terms क्या decide करना है. 28-29% of merchandise exports, that is what we are covering as on date. मैं buyer के बारे में जो आपको बता रहा था, I'm sorry I'm using mixed language, I believe you are comfortable with that. So as on date, around 5 lakh buyers we are having in record, and out of which 60% of the buyers they are active. And you'll not believe, every day more than 100 buyers are being added in our records. और उतना निकल भी जाता है साहब. Defaults है, eventuality है. Same way in India also, you get 100 exporters, 100 fresh inquiries every day. Every day we get new listed exporters. DGFT kept on using fresh import export code. Most of the time either they are importer or exporter, and it is endless actually. During 23-24, around 7 lakh crore of exports we have covered from India, which is around 30%. And in last decade, that means in last 10 years, around 9,000 rupees crores we have paid to Indian exporters. This is pan India actually. अहमदाबाद की बात करें तो last year जो हमारा claim payout था, it was somewhere around 25 crores. And the major claim was to one engineering based exporter. 4.5 crore we paid to one engineering based exporter from Ahmedabad only. We are also custodian of National Export Insurance Account. We'll highlight this later on. So, when you want to venture into export, if you are a new exporter, or when you want to expand your export business where you are an existing exporter, in both the cases, we are very much instrumental. We can help you in expanding your business. We can help you in venturing into export business. Because as far as a buyer is concerned, it is not always feasible for you to visit that particular country, meet the buyer, and after that also, what is the guarantee that deal will be closed? Who will take the responsibility of credentials of that buyer? Whether by visiting that, you can be rest assured that he will make the payment. Can't be. Even if we give you a 16-page report of any credit information agency,
16 page also, after reading 16 page also, you will not be in a position to conclude कि इसके साथ धंधा करना है कि नहीं करना है. वो 16 पेज की मगजमारी समझ में नहीं आती है. They are very smart. Your credit information agencies, be it DNB, Mira और जिसका भी आप नाम ले, they are very smart. They will give you everything A to Z, but they will not give you any conclusion. That is where we also come in picture. We can tell you कि इसको कितने का उधार दे सकते हैं, किस टर्म्स में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. We have default history. We can check primarily. At negotiation stage itself we can tell you. You need not wait for orders to be concluded. You can save your time, you can move to new buyer, you can move to new country, like that. This policy also helps you to get finance from your bank on liberal terms. As I told you, collaterals are always not sufficient. When we give policy to you, technically we cover your buyer's failure. If your buyer fail, we pay claim to you. In turn, it goes to your bank indirectly. A gap which is supposed to come under this working cycle, it will not come. We will pay that claim. Working cycle will keep on running. Account will not turn into NPA. So that is how indirectly it also help bank to reduce their NPA, reduce their gap in work, help you to reduce your working cycle gap. Means account चलता रहेगा technically. Because you don't know, आप साल में 100 shipment कर रहे हैं, 50 shipment कर रहे हैं, एक या दो default भी it can affect your working cycle, it can hamper you. Your name will appear in RBI list, EDPMS में वो bill outstanding दिखेगा, RBI आपको लिखेगा. There are so many things. बैंक्स की बात हमने कर ली है. सो पॉलिसीज टेक्निकली ऑफर्ड टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, जहाँ पे हम लोग बायर्स का फेलियर कवर करते हैं. एंड एज फार एज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, आवर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स हैं टेक्निकली, जहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर्स फॉरेन कंट्रीज में दे एस्टेब्लिश लॉट ऑफ machineries, they get involved in construction of roads, bridges and all, and that is a long term project. It keep on going for years and years, like that, 1 year, 2 year, 3 years also. So I mean to say that whatever you export, irrespective of type and nature, be it short term straightway goods exports, merchandise exports, or exports of services or exports of projects, like that, even exports of IT or IT enabled services, we are there to support you. We have products for all sort of exports. So जब buyer की बात आती है, on behalf of you, technically we evaluate your buyer when you approach us कि इस buyer को shipment करना है या नहीं करना है. So we underwrite a buyer, and there are certain parameters on which a buyer is underwritten. Technically, financial, non-financial, all sort of parameters are there on which buyer is being evaluated. Financial strength, you can easily understand that what does it will indicate. It will indicate that what is his size and health, what is his scale of operation, what is his debt, and what is his repayment cycle as far as debt is concerned. Overall financial, even financial study also include, हम ये भी देखते हैं उसमें कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दैट इज ऑल्सो अ बिग इंडिकेशन वेदर ही इज पेइंग ऑल सॉर्ट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट और नॉट, वेदर इट इज taxes related to business or whether taxes are related to deductions from employee's salary, all sort of statutory or whatever taxes are applicable, whether it is being honored and paid timely or not, if he has taken any bank loan, whether interest are served on time or not, all those sort of informations we technically see in financial strength. Then transaction behavior, इंडिया से जिस किसी ने भी एक्सपोर्ट किया है उसको टाइमली पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है अदर कंट्रीज के साथ, इंडिया से यूएई का, अफ्रीका का, बहुत सारी कंट्रीज का चलता रहता है, यूके का. तो दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, वॉट एवर आर देयर वी डू हैव अ चैप्टर वेयर वी exchange informations. This transactional behavior is also part of that exchange information. We get to know what is the position of the buyer in the market, whether he is honoring bill of other supplier timely or not. So in nutshell, if I tell, his global transaction behavior is also being exchanged. Simultaneously it happened for Indian exporter also. Of course, we don't divulge, in confidentiality we pass on the data, and that is the beauty of the trade policy.
अदरवाइज इट कैनॉट बी बायलैटरल, एक सिंगल साइड का हो नहीं सकता है. दैट इज वाई इट इज रेफर्ड एज बायलैटरल एंड इट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइक दैट. वी ऑल्सो स्टडी द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में बायर ऑपरेट कर रहा है उस कंट्री में उस इंडस्ट्री का क्या परफॉर्मेंस है, रिक्वायरमेंट है भी या नहीं भी है. घाना फॉर एग्जाम्पल, दे कीप ऑन ऑर्डरिंग ह्यूज ऑर्डर्स, दे विल बी गिविंग यू ह्यूज ऑर्डर्स. नाइजीरिया, घाना, दीज अफ्रीकन कंट्रीज, लेट मी टेल यू, जितना उनका पॉपुलेशन नहीं है, जितना वो एक साल में राइस कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उससे 10 गुना ऑर्डर दे देते हैं वो. बी केयरफुल, be very careful. We have n number of examples in our branch. Prior to that I was also in Surat. तो बहुत को हमने बचाया कि भाई फेक ऑर्डर है मत करो. एंड इवन दे विल टेल यू कि एज एन इम्पोर्टर यू हैव टू रजिस्टर्ड इन घाना, यू हैव टू रजिस्टर्ड इन नाइजीरिया, यू हैव टू पे $300. आप सोचोगे यार $10,000 का ऑर्डर है, $1,00,000 का ऑर्डर है, $300 ही जा रहा है रजिस्ट्रेशन में, देना तो पड़ेगा, गवर्नमेंट फी है. अरे उनका चूल्हा उस $300 से ही चल रहा है. दे डोंट नीड योर $1,000, they need that $300 only. बहुत सारे fraudulent transactions होते हैं. Impersonation is a new thing. It is very trendy nowadays. Lot many existing exporters are also being targeted. What they will do? Suppose Tata Steel, India का example लेते हैं. Tata Steel, they have plant more or less at least at 10-12 locations. Each of the location must be supplying to some other countries also. Now, suppose exporter sitting in Shanghai, he is sending an order to Tata Steel. Tata Steel का mail ID, technically domain, वो चुराया जाता है, and it is being copied in such a manner that it look like as if mail is originated from Tata Steel. So technically, Shanghai man will get an order from Tata Steel, which is actually not from Tata Steel. And again, second thing that you can identify that the mail will be from an individual. It will not be marked to any department in copy. Please remember, if you are getting a big order from a big house, somebody will be in CC. अकेला रमेश जी किसी को ऑर्डर नहीं दे देगा टाटा स्टील से. प्लीज अंडरस्टैंड, somebody has to be in CC. Third thing, if it is being sold at 100 rupees, why is offering you 120 rupees? Why is offering you 110 rupees? If international pricing is somewhere near about 100 rupees, why is offering you extra 10-20%? Be cautious. These are very classic example of impersonation that you will be cheated actually. You will send the goods, you will lose your hard earned money. और उसमें ECGC भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि आप जिसको भेज रहे हैं वो ट्रेसेबल नहीं रहता है. It's not traceable. Even embassy or commission, they cannot help you. Another thing, LC transactions also we have seen. Particularly in these African countries, bank address will be there, document to be sent to bank, it is LC transaction. Even in CAD transaction also I am telling you, CAD transaction also you are supposed to send the, hold the original bill of lading, send the copy and all. They will ask you to send the original bill to bank. They are supposed to get the original bill against the payment. Actually बैंक उनके घर में होता है, उनके घर का एड्रेस होता है और कुरियर वालों से उनकी मिली भगत होती है. तो बी कॉशियस. दीज आर दी लेटेस्ट एग्जाम्पल्स विच वी आर विटनेसिंग मोर और लेस एवरी डे. 2-3 लोग आते हैं हमारे पास कि सर डूब गया, फंस गया, ये हो गया, वो हो गया. प्रायर टू शिपमेंट कम टू अस, डोंट कम वंस यू हैव बर्न्ट योर फिंगर. कहीं भी क्या है कि आग लगने पे कुआं खोदना अनफॉर्चुनेटली मेंटलिटी है वो इंडिया में, तो उस चीज़ पे मत जाइए. Don't take policy from us, but if you have fresh order, come to us, we will guide you, and for that we don't charge you. Don't mistake us, we are here to support you, and simultaneously we have to ensure that we don't lose forex. That is why we opened up our economy in 1991. कुछ था नहीं हमारे पास बचा हुआ उस समय. So we have to ensure कि आप डॉलर लूज नहीं करें. तो उसके लिए हैंड होल्डिंग हम आपकी उसी समय करेंगे जब आपको ऑर्डर मिला. We will study your order, we will let you know. Of course, we cannot give you in writing कि मत करो एक्सपोर्ट, उसके लिए हमें पैसे चाहिए फिर. नहीं, there are certain guidelines which we are not supposed to go beyond, but still we will be helping you in friendly manner. I am telling you, no issue. Despite all these things, buyers fail. We underwrite buyer on so many parameter. हमारे रेटिंग के बाद भी, हमारा मेजरमेंट के बाद भी, इवेल्युएशन के बाद भी बायर फेल होता है. उसकी वजह से हम आपको क्लेम पे करते हैं.
please remember, all sort of technique we are using his financial strength, we are checking his business ability, we are checking how commodity is performing, उसका कैपिटल फिनांस सब कुछ हम स्टडी कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर को हम कभी स्टडी नहीं कर पाते. दैट इज वेयर वी फेल, यू फेल. मेरे पास पैसा है, मैं नहीं दूंगा, सो मेरा कैरेक्टर खराब हुआ साहब. दैट इज वेयर वी फेल म्यूचुअली इन बिजनेस. सो वहाँ पे कोई इंश्योरेंस काम नहीं आएगा, मतलब ऑफ कोर्स वी विल पे टू यू, लेकिन वहाँ पे कोई अंडरराइटिंग काम नहीं आती है. आई मीन टू से दिस इज हाउ वी रेट ए कंट्री. पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ भी एक्सपोर्ट करते हैं, 239 कंट्रीज को हमने अलाउ किया है एक्सपोर्ट. We are the only institution in India who have a country rating mechanism, and Reserve Bank of India as well as all the banks, they follow our country rating. It is well accepted in financial fraternity including RBI. तो 7 क्लासिफिकेशन है, it's 1 to 7, technically A1 to D, no risk to very high risk. If you fall in these 2-3, my premium rate will be very very minimal. लेकिन आप जैसे इधर अफ्रीका के नीचे घसकते जाएंगे, मेरा रेट सर बढ़ता चला जाएगा. आप बहुत पैशनेट हैं, आपको यूएसए, यूरोप, यूके नहीं मिल रहा है, चलो अफ्रीका मिल गया ठीक है, अब उसके नीचे भी आप चले गए. तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट द मोर रिस्की बिजनेस यू ब्रिंग टू मी, आई विल बी लोडिंग द प्रीमियम. आई नेवर से नो. ECGC will support you, but it will be bit costly. On an average, if you see, the premium costing is around 0.5% if you are a new exporter. But as you establish yourself and expand yourself, it will keep on reducing. You will be accumulating no claim bonus, you will be accumulating so many discounts. DGFT भी आपको कुछ स्टेटस देगा, उसकी वजह से हमसे डिस्काउंट मिलेगा. इंडियन कस्टम्स आपको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस देगा, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ एडिशनल डिस्काउंट है. तो इट कीप ऑन गोइंग. So this is how we rate the countries. The first and foremost thing what we consider while we rate a country is that how India's relationship is with that particular country in terms of economic stability, in terms of political stability. Our relations, कैसा है हमारा उस relation के साथ. Of course, rating what we can give to Sri Lanka and Bangladesh and Nepal, we cannot give that rating to Pakistan. Though we allow you to export to Pakistan. दुबई के रास्ते से आप करते हैं, स्विच BL भी होता है. सो दीज फैक्टर्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन. उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा है उस कंट्री से, पेमेंट बिहेवियर में उसके बायर्स का क्या पेमेंट बिहेवियर है, ट्रांजैक्शन बिहेवियर क्या है, वहाँ उस कंट्री में वो कमोडिटी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस कंट्री का GDP कैसे ग्रोथ कर रहा है. वी डू फोरकास्ट ऑल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री. आगे 1 साल में या 2 साल में उस कंट्री का क्या डेवलपमेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इंटरनल पॉलिटिक्स कैसा है, स्टेबिलिटी है कि नहीं गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो उस कंट्री में धंधा करने का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर उस कंट्री में फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस उनके पास सफिशिएंट नहीं है, फॉरेक्स डॉलर नहीं है, आप उनका लीरा और दिनार लेके कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ट्रांजैक्शन डिले भी है जिसमें हम लोग आते हैं टेक्निकली. तो ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन the rating of a country, and ultimately that rating determine the premium to be loaded on that particular country for shipments whatever you are trying to export. As far as risk is concerned, there are 2 sort of risk which generally we cover. One is political risk. Gone are the days कि ये risk existence में नहीं है या नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं. Let me tell you, during Gulf War we have paid up capital of 250 crore, whereas claim payment from ECGC was 796 crore, around 800 crore. So as I told you, we are never here to make the profit. So capital is not a issue as far as we are supported by Government of India. Government is ready to pump the money. You pay the claim, don't pay me dividend. That is the message. वो 250 करोड़ का पेड अप कैपिटल हमारा बढ़ते बढ़ते अभी 4,500 करोड़ पे पहुंच गया है, लेकिन क्लेम जो हमारा रहता है वो इट्स अराउंड 1000 करोड़ ओनली. सो एज फार एज अ कंट्री इज कंसर्न, एंड नंबर ऑफ पॉलिटिकल रिस्क कैन अल्टीमेटली स्टॉप योर पेमेंट अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स. वार का रिस्क है, देयर कैन बी ए वार और सिविल वार, देयर कैन बी ए कू बाई पर्टिकुलर मिलिट्री इन दैट कंट्री, मतलब मिलिट्री ने कब्जा कर लिया. देयर कैन बी रीजन्स फॉर विच यू नीड टू डाइवर्ज योर वॉयज. तो डाइवर्जन ऑफ वॉयज टेक्निकली इट विल ब्रिंग इंटरप्शन एंड इट विल
रिजल्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स टू इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट, अभी रेड सी क्राइसिस में हो रहा है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसफर डिले रिस्क, उनके पास डॉलर नहीं है, आप क्या करेंगे, उनका लोकल करेंसी, इट विल नॉट हेल्प यू टू लिक्विडेट योर आउटस्टैंडिंग विथ इंडियन बैंक्स। पेमेंट एम्बार्गोज और मोरेटोरियम्स जो टेक्निकली सैंक्शन होता है, यूएस का सैंक्शन है, रसिया से पेमेंट्स डिले आ रहा है 4-4, 5-5 महीना या नहीं भी आ रहा है, वेनेजुएला से भी इशूज आ रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रिस्क, ऑल ऑफ ए सडन हमारा कुछ झगड़ा हुआ या उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ जहां इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल में टर्की को लेते हैं, टर्की इज नोन एज मोर और लेस एंटी इंडियन एंड सपोर्टिंग पाकिस्तान। एनीथिंग गोज इन नेबरहुड ऑफ टर्की एज रॉन्ग वेयर इंडिया इज फेवरिंग। टर्की का जो इम्पोर्ट पॉलिसी है, इट मे गेट चेंज फॉर इंडिया, लेट मी टेल यू। डायरेक्टली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन राम और श्याम में झगड़ा है और राम का दोस्त इधर लक्ष्मण बैठा है तो श्याम भी उसका दुश्मन हो गया। दैट इज हाउ दिस ट्रायंगल वर्क्स एक्चुअली। तो इट मे रिजल्ट इनटू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, नो मोर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया लाइक दैट। आपका सामान हाई सी में भी हो सकता है, दैट इज वेयर वी विल कम इन पिक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ ए सडन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये ऑर्डर नहीं चाहिए, आपके पार्टी ने बोला ये ऑर्डर नहीं चाहिए। तो पॉलिटिकल रिस्क आर वेरी ब्रॉड इन मैनर, इट कैनॉट बी डिफाइंड इन नटसेल। अगर मैं आपको बताऊं तो एनी सिचुएशन, एनी कंट्रोल विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर एज वेल एज ओवरसीज बायर, दैट इज टेक्निकली पॉलिटिकल रिस्क, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ना आपका कंट्रोल है ना बायर का कंट्रोल है, यू बोथ आर इक्वली हेल्पलेस, दैट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। वी कम इन पिक्चर। एग्जाम्पल तो मैंने आपको गल्फ वॉर का दिया, अदरवाइज देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। काफ़ी साल पहले जब बर्ड फ्लू अनाउंस हुआ था इंडिया में, तो केरला से एक पोल्ट्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर, दे वेर सेंडिंग एग्स एंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वाज मोर देन 3 crores. By the time goods was supposed to reach Dubai, shipments were consigned to Dubai actually, and around 5-6 days shipments were on high sea. After 5-6 days only bird flu was announced in India. मतलब जिस दिन माल निकला उस दिन कुछ नहीं था, उसके 6 दिन बाद बर्ड फ्लू अनाउंस हुआ। दुबई सेड नथिंग डूइंग, विल नॉट टेक योर शिपमेंट। ठीक है भाई, हम कहीं और बेच लेंगे। नो, यू हैव टू डिस्ट्रॉय हाई सी, इट विल नॉट गो टू एनी अदर कंट्री। एंटायर कंसाइनमेंट वॉज डिस्ट्रॉयड हाई सी, वी पेड क्लेम, इट वॉज ए पॉलिटिकल फेलियर, नॉन पेमेंट वॉज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, बायर इज हेल्पलेस, इंडियन एक्सपोर्टर इज हेल्पलेस। वी कैनॉट टेल यू कि पॉलिटिकल इशूज में क्या क्या हो सकता है। कैन यू इमेजिन कि अभी भी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, बट इट इज फैक्ट ऑफ द डे। बिल्कुल सर। तो एनी सॉर्ट ऑफ वार, सिविल वार, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस कैन ब्लॉक योर पेमेंट। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि इस कंट्री में तो कुछ नहीं होने वाला है। रिपल इफेक्ट उसका किसी भी कंट्री में हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि इंडिया का रिलेशन उस थर्ड और फोर्थ कंट्री के साथ कैसा है। और ये सेकेंड सॉर्ट ऑफ रिस्क है जो टेक्निकली कॉमर्शियल रिस्क है, विच इज प्योरली रिलेटेड टू योर बायर। इफ यू गो थ्रू प्रोट्रैक्टेड डिफॉल्ट, मेरे पास पैसे हैं मैं नहीं दूंगा, जानबूझकर किया गया डिफॉल्ट, दैट इज विलफुल डिफॉल्ट। इट कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इंसॉल्वेंसी, बायर ने दिवालिया अपने आप को घोषित कर दिया। फॉर्चुनेटली वी हैव banking system in India is so strong, we have RBI. If you take example of US, post Lehman Brothers, they never had a banking regulatory system technically in place, and that was the reason that post Lehman Brothers collapse, within short span of 6 months 129 banks collapsed in USA alone, 129 banks. तो आप डे ड्रीम मत देखिए कि मैं तो एलसी में कर रहा हूँ, मैं तो यूएसए को कर रहा हूँ। 129 बैंक कोलैप्स करती है सर यूएसए में। इंडिया में एक आध बैंक का नाम बताओ जो आपके जन्म के बाद से अभी तक कोलैप्स हुआ और आपको उसमें पैसे आपके डूबे। गर्दन मरोड़ के रखता है आरबीआई, टाइट करके रखता है। तो दे नेवर हैड एनी रेगुलेटरी इन द फॉर्म ऑफ आरबीआई, नाउ दे हैव। दे लर्न फ्रॉम इंडिया, दे अंडरस्टूड आवर बैंकिंग मैकेनिज्म कि यार वहाँ कैसे चल रहा है, कोई बैंक फेल क्यों नहीं होती, हमारे यहाँ क्यों सब प्राइम क्राइसिस नहीं होता है। हम भी हाउसिंग लोन दे रहे हैं, कोई 6% पे दे रहा है, कोई 9% पे दे रहा है, दोनों का चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 6% वाला डूब गया, कोऑपरेटिव बैंक्स डूब नहीं रही है, क्योंकि समहाउ और अदर दे आर linked with some major bank, and again that major bank is reporting to RBI. So in turn that vice versa cycle is also working. So
आप नहीं कर सकते हैं कुछ. Even chapter 5 and chapter 11, that filing insolvency and next day joining a new company, can you imagine that position in India? 1 रुपए का डिफॉल्ट करो साहब करोड़ वैसा बैंक को, आपको अगले दिन कोई बैंक फंडिंग नहीं देगा. आपके पिताजी के साथ आपका नाम एकदम इतिहास के अक्षरों में दर्ज हो जाएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में. तो वी हैव ए वेरी रोबस्ट मैकेनिज्म एज फार एज बैंकिंग सिस्टम इज कंसर्न, फाइनेंस इज कंसर्न. दैट वाज मिसिंग टिल दे लर्न समथिंग फ्रॉम दैट सब प्राइम क्राइसिस. पोस्ट लेमन ब्रदर के बाद 125-30 बैंक कोलैप्स हुए थे 6 महीने के अंदर. बट दैट इज व्हाट दे नीड टू लर्न फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री. तो हमें भी उस चीज़ से सीखना है कि भाई एक्सपोर्ट में एलसी इज नॉट ए सेफेस्ट टूल. सेफेस्ट कंट्री इज नॉट ए सेफेस्ट डेस्टिनेशन ऑलवेज. हाउ वी कैन अज्यूम? टाइम हैज प्रूवन इट. सो दैट इज वेयर इंसॉल्वेंसी ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक कम इन पिक्चर. अगर आप एलसी के थ्रू कर रहे हैं शिपमेंट तो हम बैंक फेलियर भी कवर करते हैं. डिफॉल्ट बाय एलसी ओपनिंग बैंक भी कवर करते हैं. मतलब बैंक इंसॉल्वेंट हो गया वो भी कवर्ड है, डिफॉल्ट हुआ बैंक का एलसी केस में वो भी कवर्ड है. रेपुडिएशन इज टेक्निकली योर सीएडी शिपमेंट्स. मतलब आपने ओपन क्रेडिट नहीं दिया है, आपने साइट में दिया है क्रेडिट. साइट का मतलब हो गया कि ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग यू विल बी होल्डिंग विथ यू. You will send fax or email bill of lading, and technically that is a proof that you have made the shipment. Against that, exporter buyer is supposed to release the money. Once he release the money, you get the money, you release original bill of lading, he take delivery. What if he does not take delivery? Goods will be lying on the port. We come in picture, we cover, we pay the goods value to you. You can claim with us. These are various type of policies which are meant to cover Indian exporters irrespective of the commodity they are exporting, irrespective of the size they are expecting, irrespective of the turnover they are having. And again, let me tell you, अगर आप एक सिंगल ऑर्डर कवर करना चाहें, मोस्ट वेलकम. वी हैव ए स्पेसिफिक पॉलिसी. इफ यू वांट वन बायर टू बी कवर्ड आउट ऑफ योर 10 buyer or 20 buyer, we have buyer wise policy. If you want entire turnover to be covered, we have turnover based policy. इन नटसेल आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्ट हैं. बट अगेन लेट मी टेल यू, इफ यू डोंट ऑफर योर स्प्रेड ऑफ रिस्क टू मी, you come to me only to cover your bad risk, I will cover your 4 tires except BMW. I don't have any issue. I'll load the premium. I'll reduce the cover. अब आप समझो साहब कि आपके 4 टायर को कुछ हुआ तो BMW को क्या होने वाला है. There are exporters who run a BMW but they want coverage only for 4 tires. We give, no problem. हमारा भी तो रिस्क कम आ रहा है ना. We have never been aggressive in industry, let me tell you, and that is the reason that we have been surviving for more than 6 decades. तो सारे टॉम डिक हैरी को हम नहीं दे पाते हैं पॉलिसी. We have robust mechanism to underwrite you. We have a score card mechanism. तो डोंट थिंक कि आप आए और हमने पॉलिसी दे दी. सर ठीक है, हम आपके बायर को कवर कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको CAD नहीं पता है, DP नहीं पता है, DA नहीं पता है, सॉरी, दैट इज़ नॉट माई रोल. आई एम नॉट हेयर टू टीच यू टर्म्स ऑफ पेमेंट. यू आर सपोज टू एडुकेट योर सेल्फ. इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस तरह का सेमिनार और कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, ये बहुत हैंडी होता है, बहुत फ्रूटफुल होता है. बहुत सारी चीज़ें हमने इस तरह की सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके सीखा है. तो ट्राई टू टेक इंश्योरेंस कवर फॉर योर एंटायर एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो. ऑफ कोर्स यू एक्सक्लूड एडवांस, यू में एक्सक्लूड LC ऑल्सो, लेकिन जहाँ भी आपका क्रेडिट है, चाहे वो साइट है या ओपन क्रेडिट है, ट्राई टू टेक इंश्योरेंस फॉर ऑल दोज टर्नओवर. बिकॉज इफ यू बिकम सेलेक्टिव, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि गुड रिस्क ही बैड रिस्क में कन्वर्ट होगा. जिस पे आपने लिया उसका पैसा आ गया, ऐसा होता है. जिस पे नहीं लिया उसी का पेमेंट नहीं आया. तो डोंट बी सेलेक्टिव in any sort of insurance. Try to take comprehensive policy covering all sort of insurance, because it pays you when there is a need, and any eventuality it never come by saying I am coming, you take care. नहीं तो फिर there is no existence of insurance. It is not at all required. अगर पता चल जाए कि वहाँ आग लगने वाला है, मैं जाऊँ ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँ. पॉलिसी में 2 तरह के प्रोडक्ट हैं जनरली. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो यू कैन कम टू डिक्लेरेशन बेस्ड पॉलिसी. डिक्लेरेशन बेस्ड पॉलिसी इज नथिंग बट विल बी चार्जिंग प्रीमियम ऑन ईच एंड एवरी शिपमेंट वट एवर यू डू.
Of course, prior to that we will evaluate your buyer and we will tell you कि इस buyer पे आप जो मांग रहे हैं लिमिट इन द सेंस कि आपको 50 लाख का ऑर्डर मिला, 90 दिन की उधारी देनी है, वी विल इवेल्युएट द बायर एंड वी विल सजेस्ट यू कि 50 लाख हम देंगे कि नहीं देंगे, 90 दिन देंगे कि नहीं देंगे. बट लेट मी अश्योर यू वन मोर थिंग, वी नेवर आस्क यू टू stop your business because we are not covering. You do the business. Only thing is that I am not in a position to extend my support to you. इंश्योरेंस ऑफ कवर है आपका उस बायर के लिए. तो ये भी होता है कि 10 बायर में हम 2 बायर का कवर नहीं कर पाए, 5 बायर का कवर नहीं कर पाए, या फिर पूरे 10 बायर को कवर कर दें. देयर इज पॉसिबिलिटी. व्हाट आई एडवाइस यू, द मोमेंट यू टेक द पॉलिसी, वी डोंट इंसिस्ट यू टू come to us when you finalize the order. We expect you to come to us when you start negotiation. At that stage itself you will come to know कि बायर का हिस्ट्री ECGC में ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, डिफ़ॉल्ट का हिस्ट्री तो नहीं है. दैट विल गिव यू ए साउंड अलार्म कि व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप, भरना है कि नहीं भरना है. दोज एक्सपोर्टर्स हु ऑप्ट फॉर रेगुलर पॉलिसी विथ अस फॉर 1 year, we also give them user ID and password to access our portal. On that portal we maintain all these 5 lakh buyer list. You can search the buyer's name alphabetically, country wise. If name appear in that list, that is a defaulted buyer, because you will see only defaulted buyers list. If it is not appearing, it is not in default. That is why we were telling that we also help you in trade related services. Exposure based policies are for exporters who have higher frequencies as far as number of shipments are concerned to end a number of buyers across the globe. तो अगर आप 10, 20, 50 करोड़ तक हैं तो this is suiting you. The moment you exceed 100 crore, 50 crore even, or 60 crore, 100 crore, 1000 crore like that, you can fall under exposure based policies. Because exposure based policies technically अगर आप एक बायर को 10 करोड़ साल में कर रहे हैं, आप 30 days या 60 days के साइकिल पे कर रहे हैं, and your peak outstanding at any point of time is not more than 2 crore, you need not pay premium for entire 10 crore, you pay me premium for 2 crore. For 1 year your maximum loss of 2 crore can be compensated by us. अब आप उसमें जितना भी कर लीजिए. LC cover is also there for all the banks who are having world rank up to 25,000. This world ranking is as per Bankers Almanac. Here generally percentage cover is 90, in that case it is 80. When you take policy, you always ensure that the policy whatever I have taken is valid all the time, and policy value, that is maximum liability, is adequate. It is something like that if you do 10 crore in a year on 90 days cycle, that means your entire outstanding at any point of time will be minimum 3 crore. 2.5 करोड़ प्रिसाइसली. तो 3 करोड़ से नीचे की पॉलिसी वैल्यू वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी. सेम वे आपको एक बायर का भी देखना है कि उस बायर पे मुझे कितना क्रेडिट लिमिट रखना है. अगर मैं एक बायर को 50 लाख महीने का भेज रहा हूँ और 90 दिन की क्रेडिट दे रहा हूँ तो 2 करोड़ की मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट होगी. वट एवर यू सिप इन Jan, Feb, March, फर्स्ट बिल विल बी ड्यू ओनली इन अप्रैल, एंड बाय द टाइम यू मे ऑल्सो सिप योर 4th शिपमेंट इन अप्रैल. So ensure that कि 2 करोड़ की लिमिट आपकी उस बायर पे बन रही है. This is how you have to calculate your peak outstanding per buyer, peak outstanding company wise, like that. क्रेडिट लिमिट लीजिए बायर पे. ई कनेक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन एक्सेस आवर पोर्टल एंड यू कैन चेक बी सेल स्टेटस, बायर का स्टेटस क्या है नहीं है. शिपमेंट्स आप कर रहे हैं जिस किसी भी कंट्री को, यू डू विथ आवर कंसेंट, बिकॉज सर्टेन कंट्रीज आर ऑल्सो इन रेस्ट्रिक्टेड जोन वेयर वी विल गिव यू ए स्पेसिफिक कवर. It will not be open cover, but of course it will be valid for 6 months. Apart from that, if it is declaration based policy, you declare the shipments, maintain the premium in advance so that we can debit each shipment. Apart from that, any bill which is overdue in the sense if it is overdue more than 30 days from your due date, you approach us, you have to stop shipments. After that, see, ECGC comes in picture as secondary. प्राइमरी रोल यू हैव टू प्ले एज ए बिजनेसमैन. ऑफ कोर्स यू विल टेक ए कट ऑफ डेट कि भाई इसके 10 अप्रैल को पैसे आने थे, अभी मैं 10 मई को दूसरा शिपमेंट क्यों करूं जब 10 अप्रैल के पैसे नहीं आए. तो यूज योर वेरी बिजनेस सेंस एंड स्टॉप फर्दर शिपमेंट्स. इन्फॉर्म अस. योर टाइमली इंटीमेशन विल हेल्प अस टू इन्फॉर्म अदर एक्सपोर्टर्स हु आर डीलिंग विद दैट बायर. इन टर्न अदर बैंक्स विल नॉट फंड एनी बिल ऑन दैट पर्टिकुलर बायर. You will be helping all the exporters to
save the dollars which they are likely to lose. So timely intimate us any bill which remains overdue. टेक लॉस मिनिमाइजेशन स्टेप्स, बाहर के पीछे पड़े रहिए, मेल भेजते रहिए, मेल से ज़्यादा हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. योर रिकवरी स्टेप्स शुड बी विजिबल इन योर ईमेल्स. हाँ भाई ड्यू हो गया, ओवर ड्यू हो गया, पैसे दे दो, लाइक दैट. You lost the claim timely. Claim can be lost almost within 1 year from the date of this default intimation. Wherever buyer fails to you because of default, 4 months is the waiting period to lose the claim. But in case of insolvency, it is 1 month that you can lose the claim. And maximum time limit to file the claim is 360 days from the due date. Otherwise, it is 540 days from the policy expiry. Generally, 360 days comes earlier. And there is a prescribed format. This is very important. Let me tell you, we don't have surveyors. हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम वर्ल्ड के कोने कोने में जाके आपका असेस करें कि कितना लॉस हो गया, बाहर कहाँ है, कौन है, वो सब नहीं कर पाएंगे. तो वी डोंट हैव सर्वेयर्स. पॉलिसी जो हमारी है क्रेडिट इंश्योरेंस वो गुड फेथ पे चलती है. यू आर ऑल्सो ए को इंश्योरर. दैट इज द रीजन दैट वी डोंट cover 100%, we cover maximum 90%. 80 is the normal for corporate clients. For first time exporter it is 95. For normal exporter 10, 20, 30, 50 crore it is 90% generally. So when you lost the claim, we expect you to give all these documents as an exporter what you are supposed to maintain. These are very basic in nature. There is no rocket science involved here कि आपके पास ये नहीं होगा अगर ये तो सर आप एक्सपोर्ट मत करो क्योंकि आप कुछ ना कुछ वायोलेट कर रहे हो. आरबीआई और फेमा गाइडलाइन के हिसाब से ये एकदम हर हाल में आपके पास होना चाहिए. दिस स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर कॉपी, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल. रोड शिपमेंट बांग्लादेश का है तो उसमें लॉरी रिसिप्ट, एफसीआर भी चलेगा, फॉरवर्डर कार्गो रिसिप्ट. इन दैट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस, if you are a non-status holder, don't send documents directly. You are not authorized. This is also one mistake Indian exporters very aggressively they are doing, particularly those who are new. Don't take it otherwise. I am not a teacher. I am advising you as a friend, as an industry expert technically. क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने भेज दिया, we ask you to go to RBI and take this shipment regularized, take this transaction, get this transaction regularized. Of course, you don't go. You approach your bank. In turn, your bank approaches RBI. और let me tell you कि RBI से बहुत डांट पड़ती है आपके बैंक को, बहुत डांट पड़ती है. और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है. 6 महीना में वो रेगुलराइज करेंगे, 7वें 8वें महीने में हम क्लेम पे करेंगे. बाय द टाइम अगर ट्रांजैक्शन बढ़ा रहा, you may not survive in business. So don't send documents directly if you are a non-status holder. RBI does not permit you. So direct document to buyer and try to maintain proof of delivery of goods. It can be from shippers, liners, or from that particular country also. Apart from that, original unpaid bill accepted. Bill of exchange original आपके पास होना चाहिए in that case. Protest note. Correspondence with original buyer. Correspondence in the sense this establish your recovery efforts. हाँ भाई पैसे दे दो. Your gentle reminder should go every 1 day, every 2 days. You need to have a mechanism. This establish your recovery action technically. Apart from that, we will be checking your 2-year export statement, because when we talk about declaration based policy, it is on good faith. We assume that you are declaring all the shipments. So technically we match कि आपने जो भी किया है 2 साल में वो हमें डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है. तो we match. इसमें अगर कुछ लीकेज होता है तो we impose penalty on your claim. So all these documents from here to here, bank has to certify. Bank means the bank who has handled your export document. ये आप देते हैं तो आप 30 days में हमसे क्लेम ले जा सकते हैं. We do have debt collection agencies as far as recovery is concerned. हम लोग डेट कलेक्शन एजेंसीज को भी आपके बिहाफ पे अपॉइंट करते हैं. वो आपके बिहाफ पे बायर को चेज करते हैं. समटाइम दे रिकवर सम अमाउंट, समटाइम दे मे नॉट रिकवर ऑल्सो. इफ दे रिकवर दे चार्ज 20-25% विच इज कंपेंसेटेड बाई ECGC. You need not bear anything. And again, they work on success basis. If they succeed, then only they charge some fee. Otherwise, it is free. These are certain recent initiatives that we have undertaken.
बैंक्स को जो हम कवर देते थे, पहले हम लोग 75% जनरली कवर करते थे अगेंस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स फेलियर. नाउ इट इज़ एक्सटेंडेड टू 90% फॉर लिमिट्स अप टू 50 करोड़. नाउ इट इज़ 80 करोड़ एक्चुअली एज ऑन डेट. अपार्ट फ्रॉम दैट प्री शिपमेंट रिस्क भी हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, बट इट इज़ बिट सेलेक्टिव. इट इज़ बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क ओनली. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रिस्क. मतलब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं बायर का. अगर बायर की इंसॉल्वेंसी है या फिर कंट्री का कुछ इशू है जिसकी वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है और आपका गुड्स तैयार हो चुका है, वी कवर प्री शिपमेंट रिस्क. बट फॉर दिस वी विल बी चार्जिंग एडिशनल प्रीमियम. इट इज़ नॉट एडेड फीचर, it is customized feature. It will be offered on extra cost. Domestic credit insurance policy also we have launched. Again it is for Indian exporters जिनका minimum 25% टर्नओवर एक्सपोर्ट्स में है टोटल टर्नओवर का. अगर आप $1,000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, $1,000 का टर्नओवर अगर आपका है, इंडियन रुपये में बात करते हैं, 100 करोड़ का अगर आपका टोटल टर्नओवर है, उसमें से मिनिमम 25 करोड़ आपका एक्सपोर्ट में होना चाहिए. In that case, you will be eligible to take this domestic credit insurance policy also from our side. Cover to factors in INR. हमारा फैक्टरिंग प्रोडक्ट भी है. एग्जिम बैंक ने भी आपको बताया था, उनका अभी 1 साल का बेबी है, हमारा 6-7 साल का बेबी है. और वो 6-7 साल का भी अभी बेबी ही है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा. It's not growing. See, some of the products are not meant for Indian market, but we are forced to launch the product. Please understand. So it is there on cart. You can apply also. Whether you will get it or not, I cannot assure you. So that's it from my side. Thank you very much. One more thing I would like to tell कि साइट बिल्स में जब आपका गुड्स पहुंचता है और बायर डिलीवरी नहीं लेता है, तो हम लोग आपको 2-3 ऑप्शन देते हैं. गुड्स पड़ा हुआ है वहाँ पे, इट इज़ इनकरिंग हैवी डिटेंशन एंड डैमरेजेज. Sometime it may exceed goods value also. Don't wait for heavy detention and damage to incur. In very minimum time, try to resell the goods to some other buyer in that particular country. Now, जब आप रीसेल करेंगे, मुझे पता है कि ये राम ने लेना था, राम ने नहीं लिया, मुझे आप दे रहे हो, तो मैं तो भाई सस्ता कर दूंगा. तो buyer will ask some discount, give the discount. Detention damage charges on that particular port, plus discount whatever you offer to second or third buyer in that country. Club together, claim to ECGC, number 1. Number 2, in worst case, you may not resell to that country, may not find a buyer in that country, resell to some different country across the globe. वहाँ भी डिस्काउंट मांगेगा, दे दीजिए. तो आपका यहाँ पे ओरिजिनल पोर्ट पे डिटेंशन डैमेज हो गया, ऑनवर्ड फ्रेट चार्जेस भी लग रहा है साहब, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए, उसको भी ऐड कर लीजिए. प्लस वहाँ जो आप श्याम को डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी ऐड कर लीजिए. दीज 3 क्लेम टू अस. वर्स्ट केस आप रिसीव कर लो इंडिया में गुड, री इम्पोर्ट कर लो, लेकिन एडिशनल डिटेंशन डैमेज के अलावा जो रिटर्न फ्रेट चार्जेज हैं, इंक्लूडिंग लॉरी रिसिप्ट टिल योर वेयर हाउस, यू कैन क्लेम. गुड्स के वैल्यू का हम आपको कुछ नहीं देंगे, गुड्स आपका. अब आप समझो कि उसको कालूपुर में बेचना है कि चेन्नई में बेचना है, ठीक है. सबसे वर्स्ट सिनारियो में गुड्स अबेंडन हो सकता है. इन दैट केस अप्रोच अस फॉर प्रायर अप्रूवल. Take the goods value from us. Thank you very much. This is our contact details. If you have any query or you can visit us. We are on Ashram Road opposite to Auda. There is a building called Heritage. So you can visit us anytime. And let me assure you, we don't function as a government office. I am challenging you all sitting here that never ever you will have a feeling that you are dealing with a government office. We have corporate culture. Very young team is there. Average age of ECGC officers are hardly 40. We are 600 in numbers. We are officer oriented organizations. We have 50 branches pan India in almost all the export centers and services. You will feel wow. I'm not exaggerating. This is my 6th job and this is where I stick for last 18 years. I have been assistant commandant in CRPF also. तो मैंने वो डिसिप्लिन भी देखा हुआ है. But what we try to give to exporters is not matchable. आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं and this is technically to teach our policy holder how to take claim from ECGC. None of the insurance company does this. So I am proud to be associated with ECGC. Thank you.
बात है, एज ए लेमैन आपको टेक करके मैं जो जानता हूँ सवाल बहुत से मरीन प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जब बहुत से मरीन प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं when they reach the many marine shipments get rejected when they reach the port, and there is always that these have to be destroyed. Now they can be due to certain shipments that the antibiotic level was very high, but when I shipped from here, my certificate was showing that it is okay, but when it was checked in the port, it said it was high. Now who takes the blame, and whether you give the benefit of doubt to the seller? No, sir. My answer to this is a straight no. Our rule starts when your goods reaches there. Okay. Prior to that, anything goes wrong, we are not in picture. As far as quality is concerned, quality dispute we are not covering. And these are technically quality issues. You are supposed to follow the guidelines, whatever is applicable as far as testing of that product is concerned. USFDA की भी अगर आप बात करें तो there are n number of companies. You can take the example of Zydus, Cadila, Intas and all. If they are helpless, we cannot help you. So, see, world look to India is because of your quality. Let me tell you, it is not because of your pricing. अगर उनको pricing देखनी है तो चाइना तैयार खड़ा है सर, ठीक है. तो world look to us because of our quality. Maintain that, and that is the reason that some of the export houses they fail. See, you take the recent example of spices. Spices board or APEDA should have been very active prior to these sort of incidents. These are bad examples. So let us not earn bad name collectively. You can bring a third party inspection agency and again ensure that the third party inspection agency is appointed by your buyer, approved in the buyer's country. आप अगर करेंगे तो वो किसी काम का नहीं है, because that is your own certificate. Cannot claim कि मेरा सब कुछ सही है. This is one midway to avoid these type of quality disputes. Thank you. Sir, for that you have to be our policy holder technically. Unofficially also we can help you. मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बाहर का ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम खराब नहीं है. खराब रहा तो मैं आपको बता दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा. But don't quote this. So a wonderful session by Saket sir. अब गौरव जी बख्श दीजिए, हो गया. And मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर. जो आपने कहा डायरेक्ट डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत सारे केसेस इसलिए आगे जाके अप्रूव नहीं होते हैं या अप्रूवल में देर लगती है क्योंकि वो बैंक रेगुलराइज नहीं कर सकता है, और जब बैंक रेगुलराइज नहीं करता और आरबीआई को अप्रोच करता है तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत टाइम लग जाता है. और कभी कभी 6-6 महीने तक वो रेगुलराइजेशन की प्रोसेस नहीं होते हैं. तो जो एक्सपोर्टर स्टेटस होल्डर्स नहीं है, एसईजेड यूनिट्स नहीं है, 100% एडवांस नहीं आए हैं, वो जब तक बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं मतलब जो नोट करके लाया था कि मैं वो बताऊंगा, और वो सर ने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया. मेरे शायद बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे प्रेजेंटेशन में आ गए. सर ने उसको बखूबी कवर किया है. इसलिए इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लें और उसे अपनी कॉस्ट पे बिल्ड करके चलें. मेरे ख्याल से एक यही मैसेज शायद हम सबको यहाँ से लेके जाना होगा. सर आरबीआई की गाइडलाइन पहले चलेगी. आरबीआई गाइडलाइन कहती है आप कोई भी इनको नहीं सर, वी आर नॉट काउंटरिंग. इनको टर्म्स ये कहती है आप कैसे गुड्स को भेज रहे हैं और बायर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और कॉस्ट का एलोकेट होती है. सर डॉक्यूमेंट को भेजने पे इनको टर्म्स कुछ नहीं कहती है. इनको टर्म्स टेक्निकली डिफाइन द मैकेनिज्म. हाँ, डॉक्यूमेंट हाउ टू डू, आरबीआई की गाइडलाइन व्हाट टू डू में आपकी कंट्री की आरबीआई और फेमा गाइडलाइंस फॉलो करनी है आपको. एंड आरबीआई इज वेरी क्लियर दैट नॉन स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर्स आर नॉट सपोज टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली. Not suppose नहीं, they are not required to send the document. They are not permitted. In fact, we are honoring the claims, but it is time-taking process actually.